We got the tickets. So for 2 person it is actually $56. Okay, let's go. हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉसम वैली पे। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है। Guys, say this. ओ गॉड गाइस, कैन यू इमेजिन, ये जो झूला था ना, ये इतना ज़्यादा स्पीड में और ये रिवर्स में झूल रहा था। लाइक लिटरली मुझे तो चक्कर ही आ जाता। बट लिटरली इतनी लंबी लाइन थी कि अगर इसे झूलते भी ना तो आधे 1 घंटे लग जाते झूले तक पहुंचने के लिए। और झूलने के बाद जो हालत होता वो तो अलग। चलिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि मैं आई कहाँ पे हूँ। तो बेसिकली मैं आई हूँ कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन पे, जिसे कहते हैं CNE और द एग्जीबिशन और द EX भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली साल में एक बार होता है टोरंटो ओंटारियो कनाडा में। एग्जीबिशन प्लेस नाम का जगह ही है और ये बहुत ही बड़े स्केल पे किया जाता है। लिटरली अभी जो लॉन्ग वीकेंड होता है ना लेबर डे में, वहाँ पे 1.5 मिलियन विजिटर्स आते हैं हर साल। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा ये जो है इंडिया में मेला कहते हैं ना, मेला होता है ये। सो ये CNE की जो स्टार्ट हुई थी इस इवेंट की, वो सबसे पहली बार हुआ था 1979 में। सो यू कैन इमेजिन कि ये जो इवेंट है वो कितना पुराना है। सो गाइज बेसिकली हमारे आने का मकसद था कि हम यहाँ पे ड्रोन शो देखें। Wow, these are amazing. Thank you. Yeah, check it out. We've got a ton to look at. Yeah. 4 for 30 or 8 for 50. You can mix and match any of them. 4 for 30? 4 for 30. Okay. For the coasters. And these ones? And these are $40. These are 50. Okay. Alright, thank you. You're welcome.
गाइस अगर सीएनई के बारे में और भी कुछ जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसका वेबसाइट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके एंट्री फीस होते हैं, डायरेक्ट पासेस चाहिए झूला झूलने वगैरह के लिए, उसके लिए भी डायरेक्ट ऑल डे प्ले पासेस वगैरह होते हैं। सो गाइज हमारे वीडियो का पहला पार्ट तो कंप्लीट होता है। अब ये दूसरी सुबह है, अपने घर से स्टार्ट किए हैं और फिर बढ़ रहे हैं एग्जीबिशन प्लेस के करीब। वहाँ पे फिर से आज सुबह होने वाली है एयर शो। काफी ज्यादा वहाँ पे भी पार्किंग की दिक्कत होती है, तो हमने सोचा क्यों ना टाइम से थोड़ा पहले चले जाएं। तो हम लोग 11 बजे ही घर से निकल गए थे, 12 बजे से स्टार्ट होने वाला था और 12 बजे से 3 बजे तक ये शो चलने वाला है। तो लेट्स सी कि हमें पार्किंग मिलती है कि नहीं। एज यू कैन सी पार्किंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फुल है। सो गाइज फाइनली हमें पार्किंग तो मिल गई। पार्किंग के बाद हमें बहुत ही अच्छा सिटिंग स्पॉट भी मिल गया। एज यू कैन सी व्यू बहुत ही प्यारा है, बीच का, स्काईलाइन का। Hey guys, so you can see the air show has started and we can see this one of the huge plane which is flying in the sky. Guys, what a park this is. This park also have a small beach area where people are having their fun. They are having like a picnic, and we are also here to have the air show. So we also sat here just to take a look on this, the air show, and we are just waiting for some other planes to hover over on the sky. Oh gosh, the big plane is again coming in. Oh. सो गाइज बेसिकली ये जो एयर शो होता है ये 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है, 3 घंटे चलते हैं। तो इतना बड़ा वीडियो तो मैं डाल नहीं सकती, मैंने छोटे छोटे हाइलाइट्स क्लिप्स डाल रखे हैं। कुछ कुछ वीडियोस को मैंने स्पीड अप भी किया हुआ है ताकि आप अच्छे से उसे देख पाएँ, बोर ना हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और चलते हैं एंजॉय करते हैं एयर शो।
सो गाइज अब 3 बज चुके हैं और ये शो होता है यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एन्जॉय योर वीकेंड। बाय बाय।